Hello everyone, good afternoon. I hope you all can hear me and see me clearly. Thank you for the confirmation, RNG. Nikon sir, I've sent you a request to join the stage. Please accept that. I hope you can hear me, sir. Yes, am I audible? Yes, sir, you are clearly audible. You can share your screen, you can turn on a camera, and then we'll start in next 2 minutes. Yes, sure. Good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. Welcome to the afternoon option strategy trading session. We'll start with the options index outlook. अगर कोई ट्रेड है हमारे पास ऑप्शन स्ट्रेटजी में तो we'll definitely share that. Then we'll see if we have any trade in stock options. Post that, we'll start the session for the stock queries, and then we'll move towards the BTST. For today's session, we have Nikon sir with us who will be taking it up. Nikon sir, we are all set. I can see queries are also coming in, so you can start the session. Okay. So good afternoon, Anuj. Good afternoon, everyone. Welcome to the first afternoon session of the week. And so start करते हैं पहले major index के बारे में क्या levels है, क्या support है, and how to go about with the week per se क्या important levels है to watch out for. So निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. निफ्टी 3 दिन से लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है ऑन द डेली स्केल. ऑलमोस्ट ऊपर से 23,800 से 23,333 23,300 के पास आ गया है. बट नीचे से अगर जो मूव आया था 22,800 से 23,800, सो 1000 पॉइंट्स की एक अप मूव के बाद ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट के पास आया है निफ्टी, जो 22,800 से 23,800 का 50% retracement zone comes near 23,300, 333. तो फिलहाल it is at that crucial juncture, and previously also 23,333 एक crucial support zone था which we were talking about. तो आज का closing would be very important for Nifty, and अगर 23,333 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो एक अच्छी बात है, and we could see further थोड़ा सा bounce back towards 23,650 700. बट टिल देन एक रेंज में ही है, अभी फंसा हुआ है. नीचे में 23,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 23,000 23,100 ट्रेडिंग पर से, एंड उसके नीचे 22,800 जो स्विंग लो है. सो 23,333 वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड. उसके नीचे 23,100 23,000 के आसपास थोड़ा सा नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, एंड ऊपर में इमीडिएट जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दैट इज 23,650 एक हर्डल है, एंड उसके ऊपर 23,800. सो बेसिकली एक रेंज में है, बट एवरी अदर डे पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंटम है. बट लास्ट 3 दिन से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अपने 50% रिट्रेसमेंट के पास है. सो इट वुड बी इम्पोर्टेंट आज का क्लोजिंग ऑन निफ्टी पर से. फिलहाल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, बट क्रूशियल सपोर्ट जंक्शन के पास है, एंड आज का क्लोज वुड बी वेरी क्रूशियल फॉर निफ्टी. आज मेनली निफ्टी के जो मेटल स्टॉक्स है, आफ्टर द टैरिफ की न्यूज के चक्कर में निफ्टी मेटल इज डाउन ऑलमोस्ट 1.5% 2%. इवन थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है, देयर इज मोर पेन देन द इंडेक्स इटसेल्फ. तो वहाँ पे ज्यादा सेलिंग है अदर देन निफ्टी हार्डली 0.8% नीचे है, बट स्टॉक वाइज देयर इज लॉट ऑफ सेलिंग, एंड ऑलमोस्ट 2-3% on an average all the stocks are lower in the broader market. So the pain is more in the broader market, that is mid cap and small cap. हालांकि निफ्टी थोड़ा सा relatively better है, but 0.8% lower, that is only 200 points. अगर निफ्टी बैंक की बात करें, जो रेट सेंसिटिव इंडेक्स है, it is holding pretty well as of now. एक अगर डेली स्केल पे भी देखो तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो लोअर बैंड ऑफ द चैनल में आया है. आज का क्लोज would be important, but relatively bank nifty is doing well, only 0.5% lower, is 200 points, and nifty is also down by 200 points. So bank nifty में majorly HDFC बैंक थोड़ा सा ज्यादा पेन में, ICICI is almost flattish to negative, and Kotak Bank is relatively outperforming the other two private major banks. So Kotak Bank is holding afloat, and which is why it is holding the bank nifty from falling. And बैंक निफ्टी also 49,800 एक crucial support है जो lower band of the channel है.
तो आज यहाँ पे क्लोज आता है, कल आज का हाई निकलता है, तो देयर कुड बी सम up move wherein it can test the upper band of the channel. So एक daily में broader range में है, if you can see the channel in this part, and lower zone of the channel में है, and 49,800 is also very crucial. आज 700 का low किया लेकिन is trying to hold the lower band of the channel, and अगर ये hold कर जाता है and कल आज का high निकला है that is 50,155, then we can see some more pullback towards 50,500 and आगे 51,000. So broadly bank nifty also एक range में ही है, नीचे में 49,500 सपोर्ट है, ऊपर में 50,500 एंड 51,000. सो ये 1200 का पॉइंट का रेंज है, वेरिन लो वन पे लो बैंड पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ जाती है, लेकिन ऊपर में मोमेंटम इज मिसिंग. सो कोई कोई ना कोई एक स्टॉक लैग कर जाता है, तो विच इज वाई एक फ्री फ्लो ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, मोमेंटम इज मिसिंग एट हायर जोन, वेरिन एक फोर्थ वेब को जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है उसके बाद 3 दिन साइडवेज था एंड देन वी सॉ थोड़ा सा डाउन टेक. तो एक हायर एंड पे सेलिंग बरकरार है, तो विच इज वाई एंड एचडीएफसी बैंक विच होल्ड्स ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द बैंक निफ्टी वेटेज इज नॉट लुकिंग दैट गुड. तो अपने लोअर बैंड अपर एंड से थोड़ा सा सेलिंग एंड एचडीएफसी बैंक, विच इज वाई एक बैंक लैग कर रहा है, दो बैंक चल रहे हैं, तो एक टग ऑफ वॉर है बिटवीन द बैंक्स. सो इसलिए एक फ्री फ्लो तेजी या फ्री फ्लो मंदी नहीं हो पा रही है, एंड नीचे में सपोर्ट के पास है बैंक निफ्टी. सो इट इज होल्डिंग 49,850 और जोन्स ऑन द लोअर साइड, एंड ऊपर में 50,000 50,500 आर द इमीडिएट हर्डल पॉइंट जो लास्ट वीक का हाई था. सो दीज आर द लेवल्स दैट वी आर वर्किंग विद. एंड निफ्टी में मेटल इंडेक्स थोड़ा सा पेन में है, and even few select IT counters, but the major pain is in the mid cap and the small cap, wherein almost on an average 2-3% कोई ना कोई स्टॉक नीचे ही, even the market breadth is not that healthy, and which is why थोड़ा सा ज्यादा पेन दिख रहा है on the screen rather than index में इतना पेन नहीं दिख रहा. And even for that matter, Bank Nifty again, if I see the intraday chart, is trying to recover from the lower zones. तो जो even आर्ली पे जो we have made a channel अपने lower band पे ही है, तो यहाँ से I think we could see some pullback towards 50,000 to 300. So we'll see how to go about. अगर कुछ strategy wise अगर हम play कर सकते हैं on the index that is Bank Nifty, then we'll definitely share on that. And one BTST that we like is Engineers India. Yes, so Engineers India is one stock that we have recommended. There will be our BTST candidate for today, and I'll surely share the intraday chart wherein a strong breakout दिया है, and range निकला है almost 6-8 का दिन का 5-6 दिन का एक रेंज निकला है, एंड आज सपोर्टिव वॉल्यूम्स के साथ रेंज ब्रेकआउट है, तो 170 के ऊपर आज निकला था, ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू इंजीनियर्स इंडिया एज अ BTST ट्रेड where we can buy at 169, 168, keeping a support of 163 and look for 176 and 178 on the higher side. So Engineers India हमारा एक BTST recommendation है, wherein we can buy between 168 169, keeping a support of 163 and look for 178 176 and 178 on the higher side. So Engineers India is one BTST idea that we have shared, and I think you can make a note of that, Anuj. Buy between 168 69, which is a CMP, 163 के support से 176 and 178 are the targets for Engineers India. Got it, sir. We have shared it in the chat. Definitely. Perfect. So I think Bank Nifty थोड़ा सा और recovery आ रही है. I'll just quickly share. Yes. So low band पे एक risk reward थोड़ा सा favorable है. तो I think 49,700 जो आज का लो है, that is very crucial. And अगर वो hold करता है, तो in coming 2-3 days, I think we can see 50,000 a gradual move towards 50,300 and 50,450 odd zones.
going forward. तब तक 49,700 जो आज का लो है, that would be very crucial. अगर आज का लो कल break करता है, then we could see some further corrective 200-300 points worth corrective move towards 49,500. But आज का high अगर कल निकल जाता है, it's a decent candlestick pattern. Yes. So आज का high अगर कल निकल जाता है, तो we could see a gradual move towards 50,500. So अगर ये move play करना है, तो what we can traders who like to do a mean reverting trade can look to do a small bull call wherein you buy 50. I'll just quickly share. Just wait. I'll share the strike. Just give me a moment. So what we can do is we can go for a small bull call wherein 100 point ka spread, keep buy 50,500 ka call that is quoting at 560, 565, 560 के आसपास, and sell 50,600 call. So that is quoting at 525. So एक 40 points, 38 to 40 points के cost में बैठ जाएगा ये strategy, and एक mean reverting trade है towards 50,300, 400 आता है, then you can book out in this trade. So the risk of the strategy is the net premium paid, that is 35 to 40 points. That will be your maximum loss in the strategy, and the maximum gain would be 60 points. That is 40 minus 100, that is 60 points. So max risk is 30 to 35 points. That is a cost. Obviously, पूरा तो we won't surrender, but max risk is that to 10, 12, 20, 15 points का एक risk लेके for 20 to 25 points we can play this mean reverting trade towards 50,300 for next 2-3 days. So you can buy 50,500 call, sell 50,600 call, and simultaneously. So the net cost of the strategy is 38 points, and the reward is 60 odd points. So अगर strategy किसी को play करनी है to do a mean reverting trade towards 50,300, 400, then they can play via 50,500 small 100 point bull call spread. Sir, I'm just repeating the trade. Bull call spread, buy Bank Nifty 50,500 call at 560. Sell Yes. Bank Nifty 50,600 call at 525. Combined premium 40 points. Maximum reward 60 points. Yes, yes, yes. Yes. So I So think guys, we have given one option strategy trade. We have given one BTST Engineers India. We have shared an outlook on the overall market and index. yes. So I think in the meantime, अगर कोई और BTSC समझ में आएगा, तो we'll definitely share the same. But I think we can take few queries अगर कोई है, so that we can answer their जो उनके questions है, there we can help out. So NGS India, I think we have seen 2 rupee का move, 169 वाला 171 हुआ है. I think it's a quick move. So I think जिसने buy किया होगा 2 point तो at least they are making money. So 1% और move आया है. So Swiggy on daily time frame. Swiggy थोड़ा सा post result gap down हुआ था, and it has been seeing lower highs, lower lows from last 5 trading sessions. तो ये I think ये gap down post result था, तो उसके बाद भी stock जो अपने listing day का low था वो भी उसके नीचे भी चले गए. I think the stock can correct further. I think 350 के आसपास 350, 345 it can correct further. So I think till the time it is not breaking these lower lows का sequence, I think sell बरकरार रहेगी. Even for that matter, Zomato post result has corrected, Swiggy has corrected more, and it is below the listing days low. So I think 350 के आसपास और corrective move आ सकता है. I think one more trade for BTST is looking very good is Reddington. So I think Reddington पे एक BTST trade setup बन रहा है, अपने daily scale पे एक breakout दिया है.
and it is closing at almost over 52-week high and strong volumes के साथ trade हुआ है. So 244 is the market price. We can do a BTS in Reddington India, Reddington Limited, keeping a support of 235 and target of 258. So Reddington is our another BTST call when we can buy at 244. थोड़ा सा 1-2 रुपए का dip आता है 242 के आसपास, so we can add keeping a support of 235 and look for a target towards 258. So Reddington India, Reddington Limited is our second BTST trade, keeping buying at CMP that is 243, 44. थोड़ा सा 1-2 रुपए का dip आता है, you can add, keep a support of 235 and look for 258 as a target for BTST in Reddington. Sir, your view on RVNL? I think RVNL post the budget day का जो high किया था उधर से there has been further corrective move. एक gap down हुआ था and it is continuously making lower lows on the daily scale. I think the stock can correct further towards 370 or 370, 365. I think जो swing low है 363 वो उसके आसपास 365 के आसपास retest कर सकता है. I think अगर आपका position है तो keep a support, long है तो keep a support of 370 and hold. अगर नहीं है तो wait for a better entry point towards 360, 365. Sir, instrument quantity average cost. Okay, sorry. Century Ply 20 at 866. Century Ply. Yeah. What is the buy price? Is it 866? 866. Okay, तो I think कल का ही क्लोज के आसपास है. आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है. आई थिंक 4-4.5% नीचे है, बट अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है. तो आई थिंक टिल इट होल्ड्स अबाउट 790, आई थिंक देयर कुड बी सम पुल बैक मूव टुवर्ड्स योर कॉस्ट लेवल. थोड़ा सा आपके कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे है, तो आई थिंक वेट आउट 790 के सपोर्ट से होल्ड कर सकते हैं. एंड अगर ऊपर में अगर टेक्निकली स्पीकिंग 895 या 900 के ऊपर ही ब्रेकआउट है, तो आई थिंक एज ऑफ नाउ थोड़ा सा आज करेक्टिव हुआ है, तो आई थिंक इट शुड होल्ड 800 लेवल्स. तो 790 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए एंड लुक फॉर 860, 875 वेयर इन अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है ओनली देन होल्ड. अगर मोमेंटम छोड़ देता है 860 के आसपास, तो यू कैन एग्जिट नियर कॉस्ट. Sir, bail intraday exit or hold? BEL. Yes, it was given by Shambhu sir in the morning session. Okay, in the morning. इंट्राडे दिया है तो आई थिंक अगर स्टॉप हो गया है तो यू शुड एग्जिट. अगर नहीं हुआ है तो if it's an intraday then you should exit by 310. अगर आप कैरी करते हैं तो keep a support of 268. I think the stock can correct थोड़ा सा और. I think ऊपर में आज सुबह सारे डिफेंस में मोमेंटम था, but the momentum fizzled out very quickly because the index was seeing some selling pressure. तो थोड़ा सा ऊपर से मोमेंटम fizzle out हो गया है. But nevertheless, I think 270 and 269 are immediate support points. अगर वो break करता है तो I think you can see 265 के levels नीचे में. Purely intraday है तो I think you would have given definitely some stop loss. Then अगर stop हो गया है तो you should exit. नहीं है तो keep a support of 269 and hold. Sir, your view on Godrej Properties? Godrej is looking weak and 4 दिन से एक bearish engulfing के बाद 3 दिन से lower highs lower lows बना रहा है. I think 2100 is very crucial. 2080 that is the swing low. अगर वो break कर देता है तो I think the stock can correct further towards 2000 odd levels. तो position है तो keep a support of 2080 and hold. नहीं है तो I think you should better wait out. I think थोड़ा सा और correct हो सकता है. 2080 ब्रेक करेगा तो और 3-4% का एक बेरिश मोमेंटम आ सकता है इन गोदरेज प्रॉपर्टीज. पोजीशन है तो 2080 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए, नहीं है तो डोंट गेट इनटू इट.
Sir, why are futures of many PSU trading at 3 to 5% lower than the spot price? आई थिंक देयर वुड बी सम, किसी का कोई कॉर्पोरेट एक्शन होगा, जैसे डिविडेंड होगा 3-4 रुपए का, या अगर ज्यादा, अगर नो कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है किसी में और futures are trading lower than the spot price, it means it's trading at discount. So major short positions है काउंटर्स में, वो इंडिकेट करता है. अगर कभी कभी क्या होता है, किसी का डिविडेंड होता है, विच इज बाय द फ्यूचर ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट, बट अगर डिविडेंड नहीं है तो यू कैन चेक दैट एट इन द एक्सचेंज साइड. अगर किसी का डिविडेंड है तो वो हो सकता है, अगर नहीं है तो it would mean that major short positions are created in that count. Sir, Polyplex buying at 1200. Polyplex. बाइंग इट 1200 ऑलमोस्ट. ओके, 2 दिन के पहले 1200 आया था. वेल, सो उधर से थोड़ा सच कोई सेटअप नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम ही है, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर ऑन इवन द स्विंग लो के हिसाब से, बट नीचे से अच्छी रिकवरी आई है. तो 1140 इज वेरी क्रूशियल, जहाँ से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था एंड ऑलमोस्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया है. तो 1130-40 एक क्रूशियल सपोर्ट है, तब तक वो होल्ड कर रहे हैं तो आप बने रहिए. ऊपर में 1200 के 1222 के ऊपर ही फ्रेश लेग ऑफ मोमेंटम वुड कम इन पॉलीप्लेक्स. तो का बाई थोड़ा सा हायर रेंज पे, बट नेवरदलेस 1130-1135 इज सपोर्ट. तो वो सपोर्ट से होल्ड कीजिए एंड ऊपर में ये स्विंग हाई 1211 1215 निकल जाता है, देन वी कुड सी सम फर्दर मोमेंटम टुवर्ड्स 1280. Sir, Bajaj Finance. सो बजाज फाइनेंस वीकली पे एक अच्छा ब्रेकआउट रेंज निकला था एंड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है. तो आई थिंक अगर 810 या 8100 के आसपास आता है तो इट्स अ गुड री एंट्री पॉइंट इन बजाज फाइनेंस. अगर ट्रेडिंग पर से है तो आई गिव यू अ लेवल वेयर यू कैन एंटर. आई थिंक 8100 के आसपास इज अ गुड री एंट्री पॉइंट इन बजाज फाइनेंस. अगर 8100 आता है तो यू शुड बाय कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 7950 या 7950 and look for 8350 and 8400 on the higher side. Sir, Kalyan Jewellers. कल्याण ज्वेलर्स आफ्टर शार्प करेक्टिव मूव एक थोड़ा सा पुल बैक आया है. पुल बैक से वापस 3 दिन से 4 दिन से इट इज मेकिंग लोअर हाइज लोअर लोज ऑन द डेली स्केल. सो इमीडिएट सपोर्ट है 500 एंड ऊपर में रेजिस्टेंस है 550 560. फ्रेश अप मूव इज वे हायर, ऑलमोस्ट 600 के ऊपर है. फॉर टाइम बीइंग प्ले दिस रेंज. नीचे में 500 इज द इमीडिएट सपोर्ट, ऊपर में 550 565 is the immediate resistance point. So अगर 500 ब्रेक करता है then the stock can correct further towards 480 470. 500 होल्ड कर रहा है तो we could see some pullback towards 555 and 565. Sir, NMDC. आज नीचे है, मेनली सारा मेटल नीचे है because there is some tariff news which the US has sanctioned on the import of steel, so which is why NMDC थोड़ा सा नीचे है, 3.5% नीचे है, बट एक रेंज में काउंटर, नथिंग मेजर. सो नीचे में 61 इज द सपोर्ट, ऊपर में 67 इज द रेजिस्टेंस. तो ये 5-6 पॉइंट में ही इट इज कंसोलिडेटिंग लास्ट ऑलमोस्ट 1-1.5-2 महीने से एक रेंज में ही है. तो ऊपर में 67 आता है तो प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, नीचे में वापस 60-61 आता है तो एक वापस सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ जाती है. तो अगर लोअर लेवल्स पे आता है 61 के आसपास, 62 6150 के आसपास, तो इट्स अ गुड
mean reverting trade when you can keep a support of 1% and look for 2-3% on the higher side. Same अगर ऊपर आता है 67 के आसपास, then you can short sell and look for 2-3% move on the lower side. सर एक्सिस बैंक के बारे में क्या व्यूज है? Axis, from all the four major banks, Axis, HDFC, ICICI, Kotak, and Axis. So Axis is relatively underperforming the four out of the four private major banks. So लेकिन नीचे से थोड़ा सा अच्छा मूव आया है, तो 1000 and 995. So ये दो क्रूशियल सपोर्ट है. जब तक 995 होल्ड कर रहा है, तब तक आई थिंक द स्टॉक कैन see further pullback towards 1045, 1050. So slow and steady है, लेकिन नीचे में 995 is very crucial. अगर वो ब्रेक करता है 995, then you should exit अगर आपका पोजीशन है. And if you're long already, keep a support of 995 and hold and look for 1030 on the highs. So your view on delivery? He's looking very weak और swing low अपना trade किया है. I think the stock can correct further. I mean, आज 5.5% नीचे है. The stock can see further lower levels towards 275 to 60 also. So अगर position है तो you should exit on rallies. The swing low break किया है and it's looking very weak. Almost आज का volume is also very high. So volume के साथ selling आई है in delivery. तो I think bounce पे आता है तो you should exit your position. Bottom fishing ना करें just because it is lower by 5%. It does not mean you should try to catch the falling knife. So position नहीं है तो don't get into it. है तो ऊपर bounce back आता है, अगर pull back में तो exit. So CDSL? I think CDSL नीचे में ये जो swing low है 1240. I think the other day also I mentioned 1240, 1238 है. I think 1230 should be the support. अगर 1230 break करेगा 1230, then I think the stock can correct further. जब तक 1230, 1240 के ऊपर है, I think एक range में ही रहेगा क्योंकि gap down हुआ है and it is consolidating within this range of 1360 and 1240. So almost 120 points के range में last 6-8 दिन से है. अगर further selling आता है 1230 के नीचे, then the stock can correct another 7-8%. So be mindful of 1230 on the lower side. अगर आपका position है तो 1230 के stop से hold कीजिए. ऊपर में 1380, 1390 के आसपास आता है तो you should try to exit your trading position. अगर position नहीं है तो wait out. क्या होता है क्योंकि ये gap down हुआ है तो ये gap अब तक fill नहीं हुआ है, which is in technical terms is very bearish. तो जब तक ये gap fill नहीं होता है तो I think the stock can see to move towards 1230. अगर 1230 break कर देगा, then I think the stock can correct further. So guys, that will be all for today's session. We have shared 2 BTSTs and 1 option trade, the Reddington and Engineers India. Yes. So thanks a lot everyone for joining in. Thank you, Nikun sir. See you again soon. Sure. Have a